Assalamu alaikum, my dear students and friends. I hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I'm going to discuss the part 2 of When You Are Old. I have already discussed the part 1, and in part 1, I have discussed about the poet, his beloved mod gone, and the first stanza. Today I'm going to discuss the second and the third stanza. So let's start. First stanza consists of 4 lines. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love, false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. So, glad grace. Glad grace means youthful age. Youthful age. Pilgrim soul here means pure heart. Sorrows of your changing face means change of beautiful looks into unpleasant one. So the poet says that there are so many people, so many young men who used to love you, but they were attracted by your physical charm, by your external beauty. तो उनकी मोहब्बत चाहे सच्ची थी या झूठी थी, ठीक है, फॉल्स और ट्रू, झूठी थी या सच्ची थी, लेकिन एक इंसान था जिसको आपके प्योर सोल से मोहब्बत थी और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप विद एज रिंकल्स आ जाते हैं, आपका जो फेस है वो मुरझा जाता है क्योंकि वो यूथफुल डे की एक चमक दमक नहीं रहती है। तो एक ऐसा इंसान था जो आपके सोल से, आपकी प्योर हार्ट से प्यार करता था, ना कि सिर्फ आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से। तो पोइट यहाँ पर इस 4 लाइन में ये बताना चाहता है कि जो मॉड गॉन थी उसे बहुत सारे लोग मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत दैट वाज कन्फाइंड टू ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी, राइट, बट देयर वाज वन मैन हु यूज्ड टू लव द प्योर हार्ट एंड प्योर सोल ऑफ मॉड गॉन। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो या उसमें जितने भी चेंजेस आए। नाउ सेकेंड स्टेंजा। And bending down beside the glowing bars, murmur a little sad how love fled and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. Glowing bars here means fireplace. And amid here means among. So the poet is saying कि जब आप फायरप्लेस के सामने बैठोगी और तुम याद करोगी, ठीक है, कि तुमने क्या खोया बाय नॉट एक्सेप्टिंग माई ट्रू लव, और ये जो प्यार है मेरा ये कहीं जाके वैनिश हो गया, कहीं दूर चला गया और इसने अपना चेहरा छुपा लिया, कहाँ, सितारों के बीचों बीच। या ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, पॉइंट ऐसा भी कहना चाहता है कि एक वक्त आएगा जब तुम बहुत बुरा फील करोगी, तुम चाहोगी वापस आना, लेकिन तब मैं इस दुनिया में नहीं होगा और साथ ही में जो मेरी मोहब्बत है वो भी वैनिश हो गई होगी। सो ये 2 जो स्टेंजा हैं ये मैंने आपको समझा दिए हैं, एंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।